गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बेल। तो ये न्यूज़ में क्यों है टॉपिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है जजेस को बोला है, नीचे के सेशंस कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को, कि आपको जो अगर आप बेल दे रहे हो तो आपको रीज़न बताना है कि आपने बेल दी क्यों है, और या फिर आपने बेल क्यों नहीं दी, उसका रीज़न बताना ज़रूरी है। अभी हुआ क्या कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अक्यूज्ड को, जो कि अपनी माइनर नीस का रेप करने के लिए अक्यूज़ था, उसको जो है बेल दे दी थी। तो उस मैटर को जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया गया तो जो है चीफ जस्टिस ने खासकर जो है वो ऑब्ज़र्व किया है कि जो है आपके जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन बस बताकर जो है, जो कि सिर्फ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के बारे में बात करके बेल को दे देते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताते कि क्यों बेल दी जा रही है या फिर क्यों बेल डिनाई की जा रही है। तो अब उन्होंने चीफ जस्टिस जो है उन्होंने बोला कि जजेस जो है वो ड्यूटी बाउंड है, उनको बताना पड़ेगा कि वो कैसे इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि इस पर्सन की बेल को या तो एक्सेप्ट किया जा रहा है या फिर रिजेक्ट किया जा रहा है। तो बेल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। तो बेल जो है आपके एक फ्रेंच टर्म बेलर से निकली है, जिसका मतलब होता है टू गिव या फिर टू डिलीवर। तो एक तरह से बेल का मतलब क्या होता है कि प्रोविजनल या फिर कंडीशनल रिलीज़ दिया जा रहा है, एक सिक्योरिटी या फिर कोलेट्रल जो है कोर्ट पे आप रखता है, कोई भी आप रख सकते हो, मतलब कोई भी अक्यूज्ड पर्सन, और उसको जो है वो लीगल कस्टडी से जो है वो कुछ टाइम के लिए कंडीशनल रिलीज़ दिया जाता है। तो किस तरह की बेल्स होती हैं इंडिया में? एक होती है डिफ़ॉल्ट बेल, जिसको आप स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हो। जब अगर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने से में फेल हो जाती है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उस पर्सन, जो अक्यूज पर्सन है, उसके पास राइट टू बेल आ जाता है। इस केस में जो है स्टैट्यूटरी बेल उसको कहा जाता है। तो सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 जो है सीआरपीसी का, वो इससे डील करता है। एक होती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल में क्या होता है, जो पर्सन पुलिस कस्टडी में है उसको जो है बेल दी जाती है अंडर सेक्शन 437 और 439। याद रखो, डिफ़ॉल्ट बेल क्या है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में हो चाहे पुलिस कस्टडी में हो, लेकिन हो क्या रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई पुलिस से, उस केस में ये स्टैट्यूटरी बेल मिलती है। रेगुलर बेल कब मिलती है? जब पर्सन पुलिस कस्टडी में है, उस केस में जो है जो बेल अप्लाई कर सकता है वो पर्सन, ठीक है। इंटरिम बेल क्या होती है? इंटरिम बेल होती है या तो वो पर्सन जब तक एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले पाया, जब तक रेगुलर बेल नहीं ले पाया, तो जो शॉर्ट पीरियड के लिए उसको बेल चाहिए होती है उसको कहते हैं इंटरिम बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट देता है उस पर्सन को जिसको ऐसा लग रहा है कि उसको पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो इसलिए वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट ऑफ 2022। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया समिट। अब इस समिट के अंदर ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, और जो है इस आयुष सेक्टर को कैसे ग्रो कर सकते हैं फर्दर, उस पर डिस्कशंस हुई थी। अब इसमें डिटेल्स में जो है ये फैक्ट भी दिया हुआ है कि 2014 में आयुष सेक्टर जो था वो लेस देन $3 बिलियन का था, लेकिन अब वो जो है पिछले 7-8 साल में जो है $18 बिलियन का जो है वो सेक्टर पूरा बन चुका है। तो अब कुछ न्यू इनिशिएटिव्स भी इसमें जो है अनाउंस किए गए हैं, जैसे कि आयुष मार्क जो है वो अनाउंस किया गया है। अब होगा कि आयुष प्रोडक्ट्स के ऊपर ये आयुष मार्क लगा होगा, जिससे कि क्वालिटी जो है आपको पता लग जाएगी कि हाँ ये अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। फिर आयुष पार्क्स भी बनाने की बात की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। इसमें होगा क्या, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी आयुष प्रोडक्ट्स की। एक आयुष आहार कैटेगरी भी जो है वो अनाउंस की गई है, जिसके अंदर हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है वो उनको जो है वो रखा जाएगा। फिर आयुष वीज़ा कैटेगरी, ताकि जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो इंडिया में आके आयुष थेरेपी जो लेना चाहते हैं उनके लिए आयुष वीज़ा कैटेगरी स्पेशल निकाली जाएगी। फिर एक आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स जो हैं आयुष से रिलेटेड वो भी लॉन्च किए गए हैं। पीएम मोदी जो है उन्होंने आयुष स्टार्टअप चैलेंज के जो विनर्स हैं उनको भी अवार्ड्स दिए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं आयुष सेक्टर से खासकर उनको लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सारमाट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया ने जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो टेस्ट किया है। अब इसको टेस्ट कहाँ से किया गया? पैलेट्स जो है रशिया के एक कोने पर है, आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट पर है, और कामचटका पेनिनसुला जो आपके नॉर्थ कोरिया के पास है, वहाँ तक इसको जो है वो मार के टेस्ट किया गया है। यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा होगा। तो लगभग 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, ऑफ कोर्स। लेकिन इस सारमाट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की जो है रेंज कहा जा रहा है कि 18000 किलोमीटर की रेंज है इसकी ऑलमोस्ट, मतलब कि अर्थ के किसी भी कोने में इसको रशिया जो है वो अटैक के लिए यूज़ कर सकता है।
अब जो है इसके थोड़े से फीचर्स देखते हैं। तो जो 2018 में प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने कहा था कि बाय द एंड ऑफ 2022 वो ऐसा एक सारमाट ICBM जो है वो तैयार कर लेंगे। ऑफ कोर्स उसको लॉन्च किया गया अभी, लेकिन इसको जो है प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, तो शायद इस साल के एंड तक ये रशियन आर्म्ड फोर्सेस के पास आ जाएगा। तो इसकी जो है डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि बस यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में इसको शुरू कर दी गई थी। डेवलपमेंट 2009 के आसपास इसकी डेवलपमेंट शुरू की गई है और 2021 तक इसकी डेवलपमेंट को जो है वो कंप्लीट किया गया था और उसके बाद अब इसकी टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, तो अब इसके थोड़े से फीचर्स देखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 18,000 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है और इसके अंदर 10 और मोर वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हैं इसके अंदर। मीर्व क्या होता है? मीर्व मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। अब इसमें क्या होता है कि जनरली आपका एक मिसाइल जो है जब आप किसी जगह पे लॉन्च करते हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने बीजिंग पे एक मिसाइल को लॉन्च किया, ठीक है, एग्जांपल ऐसे ही ले रहे हैं, बीजिंग पे आपने उस मिसाइल को लॉन्च किया तो वो जाकर वहीं पर डिस्ट्रक्शन करेगा। बट मीर्व में क्या होता है, मीर्व कैपेबिलिटी एक मिसाइल में क्या होता है कि उसके अंदर अलग अलग वॉरहेड्स लगे होते हैं जो कि मल्टीपल जगहों को टारगेट कर सकते हैं। आप बीजिंग को भी टारगेट करोगे, बीच रास्ते में आपको जितनी सिटीज़ मिल रही हैं आप उनको भी टारगेट करते हुए जा सकते हो। तो वो इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स होते हैं जो कि आप अलग अलग, आप रादर दैन थर्मोन्यूक्लियर वेपन से आप बहुत बड़ी कंट्री को नुकसान पहुंचाओ, आप मीर्व के थ्रू जो है स्पेसिफिक टारगेटेड लोकेशंस को जो है वो टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऐसे 10 जो है या 10 से भी ज़्यादा कहा जा रहा है, 12 के करीब जो है वो इसमें मीर्व जो है वो लगे हुए हैं और इसकी जो हर मीर्व की जो कैपेसिटी वो 0.7 मिलियन टन्स की है। ठीक है, अब ये फर्स्ट रशियन मिसाइल है जो कि स्मॉलर हमारे हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल्स को भी जो है वो लेकर जा सकता है। अब ये ग्लाइड व्हीकल्स इतनी फास्ट स्पीड के होते हैं, हाइपरसोनिक स्पीड के होते हैं कि इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब जो है कहा जा रहा है कि ये RS-28 जो सारमाट है ये अभी तक का इस टाइम पर वर्ल्ड में सबसे जो है एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो है पैरेलल इस टाइम पर अभी तक कोई नहीं है और हो सकता है कि आने वाले कई सालों तक इसका पैरेलल कोई ना बना पाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज US ने देखा या कल US ने देखा और US ने इतनी जल्दी इसको बना लिया। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है प्रोसीजर में, तो इसकी जो है डेवलपमेंट, इसके एक पैरेलल एक ऐसा मिसाइल आने की डेवलपमेंट में भी टाइम लगेगा। तब तक रशिया का इसमें अपर हैंड हो चुका है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निधि कंपनीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा है कि अगर जो है पब्लिक कंपनीज़ वो निधीज़ की तरह फंक्शन करना चाहती है तो उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको 45 दिन के अंदर परमिशन नहीं मिलती है, या तो हाँ या ना की परमिशन नहीं मिलती है, तो आप जो है ये जो कंपनीज़ हैं वो ये जो है अज्यूम कर सकती हैं कि वो उनको परमिशन मिल गई है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं निधि कंपनीज़ होती क्या है। तो निधि कंपनीज़ जो है उसका निधि का मतलब होता है ट्रेजर। ठीक है, तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होती है। इसको अप्रूवल कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जिसको आप कह सकते हो यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये ऐसी कंपनी है, ये ऐसा बिजनेस करती है कि सिर्फ मेंबर्स से ही पैसा लेती है और मेंबर्स को ही लैंडिंग करती है। ठीक है, तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज़ हैं, सिर्फ इनकी डीलिंग्स सिर्फ मेंबर्स के अंदर होती हैं। और मेंबर्स कौन हो सकते हैं इसके? सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कोई कंपनी या कोई जो है कोई और इसका जो है इंस्टीट्यूट मेंबर्स नहीं हो सकता। अब इसको रजिस्टर कहाँ कराया जाता है? कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता है इसको। सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन नहीं लगते हैं क्योंकि ये तो निधि कंपनीज हैं और ये सिर्फ विद इन द मेंबर्स ऑपरेट कर रही हैं, तो शेयर होल्डर्स का तो बात ही नहीं होती इसमें। तो इसलिए जो है सारे प्रोविजंस तो नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ प्रोविजंस जो है कंपनीज एक्ट के इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इवन RBI भी जो है वो एम्पावर होता है कि इनको डायरेक्शंस इशू कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू देयर डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्टिविटीज़। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरोपा। तो जुपिटर का मून है यूरोपा और वहाँ पर रिसर्चर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने पाया है कि बहुत से जो है वाटर पॉकेट्स उनको देखने को मिले हैं वहाँ के डबल रिजिस के अंदर। डबल रिजिस क्या है? वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं जो एक तरह से वैसे कह सकते हो कि वहाँ पर जो है बर्फ़ की जो है वो परत है और उसके नीचे बहुत सारा पानी हमको देखने को वहाँ पर मिला है। ठीक है, तो यूरोपा जो है ऑफकोर्स उसका साइज़ जो है वो अर्थ के मून से भी छोटा है और 1/4 ऑफ अर्थ इसका साइज़ है रादर, और उसका जो है बहुत ही जो है थिन ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर है। और यूरोपा का जो ये आईसी सरफेस जिसको आप डबल रिज कह रहे हो उसके नीचे बहुत सा पानी जो है वो देखने को मिला है और इतना वो पानी है जितना हमारे अर्थ का ट्वाइस ऑफ द वाटर वहाँ पर हमको देखने को मिला है। ठीक है, सो नासा जो है वहाँ पर एक मिशन भी भेज रहा है यूरोपा क्लिपर नाम से, जो कि 2024 में जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिविल सर्विसेज डे। तो 21
अप्रैल को आपको पता है कि सिविल सर्विसेज डे जो है वो मनाया जाता है, तो इसी दिन जो है प्राइम मिनिस्टर के अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया जाता है। तो अब 21 अप्रैल को क्यों मनाते हैं हम सिविल सर्विसेज डे? बिकॉज इसी दिन जो है जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जो प्रोबेशनर्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 1947 में उनको एड्रेस किया था। तो लेकिन ऑफ कोर्स हम 1947 से लेकर आज तक तो नहीं मना रहे हैं सिविल सर्विसेज डे, लेकिन 2006 में हमने मनाना शुरू किया और सबसे पहला फंक्शन भी जो है विज्ञान भवन में रखा गया था। अब ये प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो ऑफ कोर्स 2006 में जो है यही अवार्ड शुरू किया गया, और शुरू में ये अवार्ड सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स या ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। लेकिन 2014 में इस स्कीम को रीस्ट्रक्चर किया गया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को जो है वो रिकॉग्नाइज करना शुरू किया गया, जो कि प्रायोरिटी प्रोग्राम्स, इनोवेशन या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे थे। फिर 2020 में इसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करके जो है ये कहा गया कि अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा इससे। ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या लाए गए? ऑफ कोर्स अब जो क्रेडिट फ्लो, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो अच्छा क्रेडिट फ्लो कर पाए हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, या फिर जन भागीदारी मूवमेंट में जो है लोगों का अच्छा पार्टिसिपेशन वो दिखा पाए हैं, सर्विस डिलीवरी अच्छी है उनकी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर पब्लिक ग्रीवेंसेस को अच्छे से रिड्रेस किया है, उनको जो है इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है इस अवार्ड के अंदर। ठीक है, कुछ और कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि जो नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स जिन्होंने अच्छा काम किया उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके भी जो है उनको भी इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब एक तरह से नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनों कैटेगरीज में जो है ये अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। तो नीति आयोग ने ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी निकाली है ताकि जो है ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो इंसेंटिव मिल सकें जो कि स्वैपेबल बैटरीज पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो बैटरी स्वैपिंग क्या होता है, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। सिंपल आपको टर्म से ही समझ आ रहा होगा। बैटरी स्वैपिंग मतलब कि आप अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जा रहे हो, समझ लो कि आपके कुछ टाइम बाद उसकी बैटरी जब खत्म हो गई तो आप उसको चार्ज ना करो, रादर दैन आप वो जो आपकी बैटरी खत्म हुई है वो आप किसी कंपनी को या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है जो बैटरी स्वैपिंग में डील करता हो, तो आप उसको जो है वो एम्प्टी बैटरी वापस कर दोगे निकाल कर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और उससे जो चार्ज बैटरी है, फुली चार्ज बैटरी, वो आप वापस रख लोगे। ठीक है, ताकि आपको वेट ना करनी पड़े, आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो चलाते रहो। ठीक है, तो इसका फ़ायदा कितना ज़्यादा है, आपको वेट नहीं करनी पड़ रही और जो आपकी बैटरी है वो आपको चार्ज होकर दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है स्वैपिंग अलाउ है। ठीक है, दूसरा एक सबसे बड़ा इससे भी बड़ा जो है वो आपका फ़ायदा ये है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो उसमें जो कॉस्ट है वो बैटरी की सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है। ठीक है, बहुत महंगी पड़ती है वो बैटरी, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है मोस्टली लोग नहीं खरीदते हैं। तो अब जो है गवर्नमेंट ने अलाउ किया 2020 में अक्टूबर में कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीद सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बैटरी भी खरीदनी पड़ेगी, आप सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, आप उसको भी रजिस्टर करा सकते हो और आप जो है कोई बैटरी स्वैपिंग जो है कोई सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि आप कोई सब्सक्रिप्शन समझ लो जैसे आपकी होती है, जैसे एक बार मैंने पहले भी आपके साथ ये डिस्कस किया है कि जैसे आपका नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है या आपके किसी भी कोई आप सब्सक्राइबर बन सकते हो इन बैटरी स्वैपिंग कंपनीज़ का जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो आप उनको मंथली कुछ चार्जेस पर उनसे बैटरी जो है वो आप एक तरह से रेंट पर ले सकते हो। जब आपको ज़रूरत है तो आप उसको ले गए और अब बाद में आपने उसको वापस कर दिया। ठीक है, आपको वो फुली चार्ज बैटरीज देंगे, जहाँ पर आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो आपको वो फुल चार्ज बैटरी देंगे रिप्लेस करके, तो आपको बैटरी खरीदनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से ये बैटरी स्वैपिंग का ये एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें प्रपोजल्स क्या हैं? अब इसमें कहा जा रहा है कि जो लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर टैक्स रेट्स हैं उसको कम किया जाए जीएसटी काउंसिल द्वारा। फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि बैटरी के साथ बिकते हैं, जो उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, ये इंसेंटिव सेम उन्हें भी मिले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिना बैटरी के बिक रहे हैं या फिर स्वैपेबल बैटरीज के ऊपर फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जनरली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ क्या करती हैं, ताकि आप उनसे इलेक्ट्रिक जो है बैटरी भी खरीदो, उनके उसमें भी कमाई हो, तो वो एक इस तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे कि उनकी ही कंपनी की आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इंसेंटिव्स उन कंपनी को देना शुरू करो कि वो एक, अब समझ लो मोबाइल से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मोबाइल में आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने एप्पल का फ़ोन है उसमें अपनी सैमसंग की बैटरी डाल दी। एप्पल जो है वो बैटरी बनाता है आपके अपने ही फ़ोन के लिए बनाता है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप किसी भी फ़ोन में
किसी भी तरह की बैटरी यूज़ कर सको, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा ना आपके लिए, ठीक है। सो अब उसमें होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो कंपनीज, फिर तो उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, फिर तो एप्पल को, सैमसंग को, इन सबको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ताकि वो ऐसे व्हीकल्स बनाएं ताकि उसमें जो है बैटरी स्वैपिंग पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो अब जो है गवर्नमेंट को ये भी कहा जा रहा है कि आप ये भी जो है जो है आइडेंटिफाई करो, ये भी आप इंश्योर करो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जब तक इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तब तक वो कंपनी जो है यूज़र्स को बैटरी स्वैपिंग की जो है फैसिलिटीज़ दे और उसके बाद बंद कर दे। तो एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि पब्लिक बैटरी चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपको बनाने हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स को, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को बोला है कि जो व्हीकल्स जो बिना बैटरी के बिकते हैं उनको भी आप रजिस्टर करना शुरू करो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को कहा है कि बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी बनाओ। ऑफकोर्स आप चार्जिंग स्टेशंस तो बनाते ही हो, लेकिन बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी बनाओ जहां पर ऑफकोर्स सिर्फ चार्जिंग ही नहीं, आपको बैटरीज भी जो है वो फुली चार्ज आपको वहां पर मिल सके यूजर्स को, ठीक है। फिर अब ताकि चोरी का या मॉनिटरिंग मतलब चोरी का जो है वो या फिर जो है इशू ना हो, तो उसके लिए जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो असाइन करने की बात कर रहे हैं कि स्वैपेबल बैटरीज को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आप अलॉट करो ताकि हम उन बैटरीज को ट्रैक और मॉनिटर कर सकें, ठीक है। जब भी जैसे ही वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही उसको एक नंबर, जैसे आपकी गाड़ी में इंजन नंबर होता है ऑफकोर्स बेसिकली, वैसे ही बैटरीज को भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर एक UIN दे दिया करो, ठीक है। तो ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का जो है नीति आयोग ने जो है ड्राफ्ट इसका रिलीज़ किया है। तो देखते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is bail. So recently a matter was being heard by the Supreme Court in which the Rajasthan High Court has given bail to a man who was accused of raping his minor niece for years. So that's why Supreme Court has observed that judges are duty bound to give reasons for granting or denying of bail, especially those cases in which serious offences are or hardened criminals are involved. So the Supreme Court has observed that generally the lower courts judges, what they do is they make a general observation regarding the facts and circumstances while considering the bail application, and they do not provide any specific reasons regarding the granting of bail or denying of bail. So that's why Chief Justice of India has specifically remarked that judges are duty bound to explain the basis on which they have arrived at such a conclusion, because any unreasoned order of denying or granting a bail would smell of arbitrariness. Okay, that's why the court has asked the lower court judges to give specific reasons for denying or granting of bail. So what is the term bail? So it is of course originated from the old French verb bailer, which means to give or to deliver. So bail is basically a conditional release of a person who is held under legal custody. He could be either in the judicial custody or even in the police custody. So what the court says, that you provide us some security or a collateral and we would grant you release from the legal custody, a conditional release. It is not a permanent release, it is a conditional release until the case is being heard by the court. Okay, so what are the types of bail in India? So the first one of course is the default bail, which is also known as the statutory bail. So if a person is either under the judicial custody or police custody, but the police fails to complete the investigation within a specified period of time, then the person can apply for this statutory bail. Okay, so it is covered under the section 167 of under section 167 subsection 2 of CRPC. The most prominent one is the regular bail. So this is basically a bail which is applied by a person who is under the police custody. So this is the most common one. This is the regular bail. And there is also an interim bail. So interim bail is applied by a person for a short period of time until the court is hearing the plea of that person for anticipatory bail or regular bail. Okay, so what is the anticipatory bail? The term anticipation means expecting. So okay, so that's why when a person is expecting that he could be arrested by the police for a non-bailable offense, then that person could apply for anticipatory bail under section 438 of CRPC. He could apply for it from either the Sessions Court or the High Court. Okay.
So the next topic is Global Ayush Investment and Innovation Summit. So PM Modi has recently inaugurated this summit, which was held at Gandhinagar, Gujarat. So it was basically organized as a dialogue between entrepreneurs, industry startups, and other stakeholders, so that research and and even innovation related topics can be discussed, and how to increase investment in this Ayush sectors can be discussed. So this dialogue was held for that. Okay, so it was found that in 2014 Ayush sector was less than $3 billion, but now today it has increased to more than $18 billion. So almost 6 time jump has been seen in the last 7 to 8 years. Okay, so what are the new initiatives that has been announced? So of course this Ayush mark has been announced. So Ayush mark is the quality mark, so people would be ensured that they are getting a good quality Ayush product. For any product that has this Ayush mark would be, of course, we would of course instill confidence amongst the consumers that this product is good. Okay, so another one is Ayush parks. So Ayush parks are the facilities which will allow research and manufacturing of Ayush products across the country. Another category has also been initiated, that is the Ayush Ahar. So of course this will provide herbal nutritional supplements. So people who want to have these herbal nutritional supplements, they can check this category of Ayush Ahar from the government. Okay, there is also a proposal to grant Ayush visas, so that foreign nationals who want to take advantage of Ayush therapy can get them in India. PM Modi also announced the launch of Ayush Export Promotion Council and other information and communication technology initiatives for the benefit of Ayush sector. He also awarded the winners of Ayush Startup Challenge. Okay. So the next topic is Sarmat Intercontinental Ballistic Missile. So of course Russia has tested this Sarmat Intercontinental Ballistic Missile. It was launched from Peletsk, that is in northwestern Russia, to be targeted to Kamchatka Peninsula, which is about 6,000 kilometers from that location. So this is the map which you can see here, and this test has been successful. So actually this missile system was started. The process on the working on this missile system started in the year 2009 itself, and it was poised to be completed by 2021, and of course it was completed by that time. And now in April its test has been done. Of course this launch is coinciding with the Ukrainian war, but of course it was not planned that way. Okay, so now this let us see about this missile system also. So of course it has a strike capability of about 18,000 kilometers, and it has a speed of about 20 Mach. So it means that it can target any location on the earth from Russia. So because it has a strike range of about 18,000 kilometers, and it has 10 warheads which are MIRVs. Okay, so multiple independently targetable re-entry vehicles. These are basically multiple warheads which are independent of each other. So like I was giving an example that if you are generally when you launch a missile and you are targeting Beijing, then all the warheads would fall on Beijing. Okay, because they are all interconnected. But in independently targetable re-entry vehicles, they all are independent. So let's say when you're launching a missile on Beijing, in the midway it can strike multiple cities. Okay, so that would create more destruction as compared to a single missile. Okay, and you can also select targets where these multiple independently targetable re-entry vehicles would target the enemy territory. Okay, so like these are having 10 warheads, or rather reports are suggesting that these Sarmat missiles have more than 12 warheads, warheads. Then it would be able to target 12 different locations. Okay, each of the warhead would be able to create a blast yield of about 0.7 million tons. Okay, so this is the first Russian missile which can also carry the hypersonic boost glide vehicles. So hypersonic boost glide vehicles, generally they use the FOBS. FOBS is frontal orbital maneuverability system. So this, what happens with that, you can launch a missile and it can take the circumference of the entire earth
in a fraction of time as to target any place. Okay, so like that I think it was the news of August 2021 when China tested such a hypersonic glide vehicle, and this vehicle was this it was reported that China would be able to target the US within a few minutes from China from the southern polar route. Okay, so that's what it is. Hypersonic boost glide vehicles, they have a remarkable speed, and they can of course maneuver very easily. Because of their maneuverability and very high speed, they are very hard to intercept. Okay, so that's what makes this Sarmat, at least now, as of now, it has no other parallels. It is the most advanced intercontinental ballistic missile which is possessed by any other country in the world. Okay, so the next topic is Nidhi companies. So Ministry of Corporate Affairs has recently amended the rules which govern the Nidhi companies. So now the government is saying that public companies who want to function as Nidhi companies, they must obtain prior declaration from the central government before accepting deposits. So in case their application is not responded by the central government within 45 days, then they can assume that the approval has been given to them. Okay, so what are the Nidhi companies? So the term Nidhi in Indian context means treasure. So these are basically companies which are mutual benefit societies. Okay, why mutual benefit societies? Because they borrow from their members and they lend to their members only. Okay, and they are notified by the central or the union government only. So they are mutual benefit societies because their dealings are restricted to their members only, and their membership is limited to individuals. No company or any other institution can be a member of Nidhi companies. So only individuals can be the members. So these companies are registered under the Companies Act of 1956, and even the RBI is empowered to issue directions to them, especially in matters relating to deposit acceptance activities. So the next topic is Europa. So Jupiter has a moon called Europa, and the team of researchers from Stanford University have found that there might be an abundance of water pockets beneath the formations called double ridges. So these double ridges are basically the icy surfaces which have been found on Europa. Europa is just 1/4 the size of Earth, but it has twice the amount of water on itself. Okay, so that's why it is considered as very important for our exploration, and it has a very thin oxygen atmosphere, and the NASA is expected to launch its Europa Clipper, that is the Europa mission, in 2024 for extended study. Okay, so the next topic is Civil Services Day. So on the occasion of Civil Services Day, PM Modi has conferred the Prime Minister's awards for the excellence in public administration. Of course, this Civil Services Day is celebrated on 21st April every year because on this very day in 1947, Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel addressed the probationers of administrative services. Okay, so but we started celebrating this Civil Services Day in the year 2006 when such first function was held at the Vigyan Bhavan. Okay, so what are these awards? So these awards also started in 2006 when we started to acknowledge the contribution of districts or organizations of the central and state governments who have made some extraordinary and innovative work in their fields. Okay, but this scheme was of course restructured in 2014 when we started recognizing the performance of district collectors also. Okay, and in 2020 we also started recognizing the performance of district collectors in towards economic development of their own district. Earlier, we were only recognizing their specific contributions, like how they have performed in priority programs, how they have innovated, or how they are managing the aspirational districts. But later on, we extended this award to the entire country and to see how their district collectors have been performing towards the economic development of their district. So in 2020,
we started giving these awards to recognize the district collectors who have been working very hard for the inclusive credit flow to the priority sector, promoting people's movements through Jan Bhagidari, and even redressal of public grievances. Okay, so there was also a special category to recognize the efforts of district level officials who are working under the Namami Gange program. Similarly, the officials who have been working under the aspirational districts program were also recognized, and basically the entire country or the entire tier of the government, that is at the national, state, and district level, were recognized under these awards. So the next topic is draft battery swapping policy. So Niti Aayog has prepared this draft battery swapping policy, and it is proposing to offer incentives to electric vehicles which have swappable batteries. Like I was giving you an example that if you have an Apple phone, you cannot just use the Samsung phone's battery in that, okay, because the phone has been designed in such a way that you have to purchase the Apple battery only. Okay, so see, this is the same thing with electric vehicles. Electric vehicles design their vehicle in such a way that you have to use their battery only. Or even if the government in 2020 allowed the consumers to get electric vehicles registered even without the battery, even then it was difficult for the consumers to register such vehicles because the companies were not selling them. The companies were saying that we cannot sell you vehicles without a battery, because they wanted to earn from battery also. So that's why Niti Aayog has said that we must provide some incentives to these companies who would be willing to sell their electric vehicles without batteries. Okay, so that is what has been proposed by the Niti Aayog. So what is battery swapping? Like you can decipher from the name itself. A vehicle that let's say that you are going to a city, or you're moving in your electric vehicle, and your battery gets discharged. So you have to either sit at that location and get the battery fully charged, or this option of battery swapping is also available. So battery swapping means that you just stop there, you change the battery, you let's say you have a subscription of a company which provides this battery swapping facility. You just take the battery, you give them your fully discharged battery, and you take the fully charged battery from them and you install it in your electric vehicle, and you just move on. Okay, so in that case you would not need to stop, because you would not need to charge the battery. So that's the benefit of battery swapping. Generally it is used for smaller vehicles like 2-wheelers and 3-wheelers, but of course there are efforts so that 4-wheelers and even e-buses can use such facilities. Of course they will have very large batteries, so removing them and then replacing them would be a hard thing to do. That's why some alternatives are being explored to even use this battery swapping facility for them also. Okay, so what are the proposals that the Niti Aayog has given? So Niti Aayog has said that first of all we have to reduce the taxes on lithium ion batteries, so that people can buy them separately, or even a market for separate batteries for electric vehicles can also proliferate. So it has also said that electric vehicle companies which start producing electric vehicles with battery swapping facility, if Apple starts producing phones in which you can use any of the batteries available in the market, then you should at least give some incentives to Apple to start manufacturing such phones. So this is the same case with EVs also. You have to give some incentives to the companies that they would not force the consumer to buy their own batteries to buy the battery from the company only. Okay, so the proposals are also saying that there must be a minimum contract duration, so it does not mean so that it does not occur that the company stops providing the battery battery swapping facility to the consumers after the incentives from the government stops. Okay, so it is also saying that the transport department and state transport departments must ease the registration process for vehicles which are sold without batteries. Municipal corporations also should also
allow municipal corporations should also function, and they should also start producing batteries. They should also start giving land to the battery swapping stations. Okay. Also, UIN should be assigned to UIN should be assigned to swappable batteries, so that we can help. So it can help and help to track and monitor them. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.